Hello. I was too busy, so काफ़ी दिनों बाद सो वी आर बैक। SQL इंजेक्शन का एक वीडियो ऑलरेडी बने हुआ है, वहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया था। तो आज मैंने ये देखा SQL इंजेक्शन इंट्रोडक्शन, सो सोचा शेयर कर देता हूँ। हालांकि मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बट मुझे लगता है आप लोगों को ये करना चाहिए। जो डिफेंसिव साइड में है, ऑफेंसिव साइड में, ये सभी के काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफेंसिव वालों के काम आएगा, ये दोनों के काम आता है। सो learn how to detect and exploit SQL injection vulnerabilities। ईजी है और बेसिक्स कवर होंगे इसमें। और यहाँ पे एक रेफरेंस है, ये वाला ओवास टॉप 10 2025। तो कुछ डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लेना कैसे बचते हैं, ये भी है। और कुछ अटैक सिनेरियोस यहाँ पे शो किए गए हैं, लाइक दिस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके। और यहाँ पे जो रेफरेंसेस दे रखे हैं ये ज़रूर पढ़ना, इससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा थोड़ा। और यहाँ पे कुछ CWs है SQL इंजेक्शन से रिलेटेड। जो लोग बग बाउंटी करते हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। सो हम चलते हैं रूम पे। सो यहाँ पे कुछ कहानी लिखी हुई है, पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि SQL इंजेक्शन क्या होती है, क्या क्या कर सकती है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। सो इट इज़ अ वेल नोन डेंजरस वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी। कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट टू अंडरस्टैंडिंग हाउ SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अराइज इन वेब एप्लीकेशंस, कैसे आती है। तो डेवलपर्स जो है उनको भी ये रूम करना चाहिए, इससे पता लग जाएगा कि किस टाइप की क्या चीज़ है। सेकंड है आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट पोटेंशियल SQL इंजेक्शन पॉइंट्स एंड एरर बेस्ड यूनियन बेस्ड इनबाउंड SQL इंजेक्शन। एंड अदर इज ब्लाइंड SQL इंजेक्शन, जिसमें आता है ऑथेंटिकेशन बाईपास, बुलियन टाइम बेस्ड एंड आउट ऑफ बैंड। ये सेवरल टाइप ऑफ SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज। एंड लास्ट में है अप्लाई रेमिडिएशन स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट SQL इंजेक्शन। प्रीरिक्विजिट की बात करें तो यहाँ पे एक डेटाबेस SQL बेसिक्स का रूम है, बेसिकली प्रीमियम है। जो प्रीमियम यूजर्स है वो इसे कर लेना, जिससे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज थोड़ी समझ आ जाएगी, और जिसको आती है अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए ताकि हम क्वेरी लिखते टाइम गलती ना करें। तो इसमें ज्वाइन करते हैं। सेकंड टास्क है SQL एसेंशियल्स। तो कुछ SQL जो हमारी क्वेरी लैंग्वेज है उससे कुछ यहाँ पे क्वेरीज दे रखी है। लाइक हमने यहाँ पे जो जिस इंट्रोडक्शन को दिया हुआ था हिंट, तो यहाँ पे दे रखा है इसने SQL कमेंट्स। लाइक इस चीज़ का यूज़ करके, यानी कि /* का यूज़ करके हम कमेंट करते थे चीज़ों को। और ये वाली चीज़ है डबल डैश फॉलोड बाय जो स्पेस है, इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करते हैं। ये स्टार्ट सिंगल है किसी लाइन को कमेंट करने के लिए, और मल्टी लाइन को कमेंट करने के लिए ये यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, सब जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी दे रखी है, ये सारी क्वेरीज जनरेट करना भी सीख जाओगे जब SQL सीख जाओगे। इट इज़ ईजी, ओके, ज़्यादा कुछ वो नहीं है जैसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ दे रखा है एडमिन एज यूज़र नेम टर्न इनटू दिस, कि लाइक एडमिन जो यूज़र नेम होता है हमें बाईपास करना होता है जब ऑथेंटिकेशन, तो हम ये क्वेरी डालते हैं SQL की, ये वाली, एंड पासवर्ड लाइक दिस, कुछ भी। सो ये जो डबल आइफन है ये क्या है, इग्नोरिंग में यूज़ होता है कि एवरीथिंग आफ्टर दिस इज इग्नोर्ड, मतलब इसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो इग्नोर करनी चाहिए। लाइक यहाँ पे जो शो हो रखा है एंड पासवर्ड इज दिस, तो इग्नोर हो जाएगा। सो पासवर्ड का चेक
होगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा। अगर एडमिन के बाद ये डाला हुआ है तो पासवर्ड चेक रन होगा ही नहीं, तो सीधा वाईपास हो जाएगा। अब है यूनियन क्वेरी, ये तो थी कमेंट्स। यूनियन क्वेरी है, यूनियन ऑपरेटर कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ टू एंड मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमने किसी दो टेबल से दो डेटा सेलेक्ट किया है, तो ये जो यूनियन है उस दोनों को कंबाइन कर देगा। ये यूनियन का काम होता है। लाइक सेलेक्ट नेम एंड एज, दो एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट किए फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड यूनियन का यूज़ करके हमने यूज़र नेम के साथ में और आईडी के साथ में उसको कंबाइन कर दिया है, जो एडमिन से ली गई है बस। सो अगर यूनियन का यूज़ करता है अपेंड देयर ओन सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ लाइक एंड वाइट का तरीका है। लाइक दिस, लाइक यानी कि हम उसको बताते हैं क्वेरी में डेटाबेस को कि इस टाइप का कुछ है तो हमें शो करो या फिर सेलेक्ट करो वहाँ से। लाइक के सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, जहाँ पे यूज़र नेम कुछ ऐसा होगा लाइक दिस, लाइक ADM। इसके बाद में अगर IN नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन यूज़र है, तो वो सारे शो हो जाएंगे। परसेंटेज का मतलब ये है। तो लाइक दिस, ठीक है, पहचान के लिए। सो एंड रिटर्न एनी यूज़र नेम, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे बता भी रखा है इन्होंने, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक है। हम सीधा मूव करते आगे। और लिमिट, लिमिट जो क्लोज लिमिट कर देता है नंबर्स ऑफ रोज। लाइक हमें कि इतनी रोज ही शो करनी है टेबल की। लाइक यहाँ पे दे रखा है लिमिट 1 2 1। 1 का मतलब सिर्फ एक ही रो शो करेगा, रिटर्न करेगा हमें डेटाबेस से ये क्वेरी। और ये क्वेरी जो दो रो है वो स्किप कर देगा, उसके बाद जो थर्ड रो है वो उसकी फर्स्ट रो कहलाएगी और वो रो रिटर्न करेगा। और यहाँ पे इंजेक्शन पेलोड दे रखा है लिमिट का, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन दे रखा है कुछ, ग्रुप कॉन्टेक्ट स्ट्रिंग फंक्शन है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे शो कर रखा है लाइक दिस, कि ग्रुप कॉन्टेक्ट चाहिए, उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये सेपरेटर दे रखा है, वो दोनों को सेपरेट कर देते हैं लाइक दिस। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है यहाँ पे पासवर्ड ये है मार्टिन क्लास, ये वही सब, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के काम आएगा स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, देखो कि अगर हमने ये क्वेरी डाली तो हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप का शो होगा लाइक दिस। याद रखना ये प्रैक्टिकल में यूज़ होगी क्वेरी। ओके, द इंफॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस। अब इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या होता है? लाइक हमारे पास बहुत से डेटाबेसेस होता है। MySQL डेटाबेस हो गया, माई डेटाबेस हो गया, या PostgreSQL दे रखा है। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटाबेसेस भी होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का एजर हो गया, तो ऐसे कुछ होते हैं। तो जो उनके अंदर ये मतलब लाइक एजर हो गए, AWS है, उनके अंदर यही चीज़ होती है। हमारी डेटाबेस MySQL जो इनबिल्ट होता है, वो तो बड़े बड़े नाम है सिर्फ कहने के लिए, अंदर तो या तो कोई लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, या और भी बहुत सारी जैसे ELF हो गए, ऐसे और भी स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, वो सारी डेटाबेस क्रिएट होती है, डेटाबेस में यूज़ होती है। तो इनको बोलते हैं, जो ये जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, इनको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन स्कीमा। मतलब मेटा डेटा एक टाइप से कंटेन करता है सर्वर पे, जिसमें कुछ भी डेटा, जैसे डेटाबेस नेम्स हो गए, कॉलम्स नेम हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, वो कंटेन करता है, उसको इंफॉर्मेशन स्कीमा बोलते हैं। लाइक कॉलम हम कह देते हैं, कॉलम को बोल देते हैं इंफॉर्मेशन स्कीमा, कि वही तो चीज़ सबसे ऊपर तो वो वेरिएबल, लाइक हम कह सकते हैं वेरिएबल तो होता नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल्स का और कॉलम्स का दे रखा है यहाँ पे। लाइक अगर हम इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल्स का निकालेंगे तो वो लिस्ट ऑफ एवरी टेबल दे देगा, कॉलम्स बोलेंगे तो एवरी कॉलम्स वो शो कर देगा। अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में when performing union based injection, information schema is how you go from I can inject
I know every table and column in the database. These two questions. Okay. And a note on database engines. ये जो नोट दे रखा है कि this room uses MySQL syntax throughout. Other language like MS SQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, उनके अलग अलग खुद के वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग कॉमन सिंटैक्स होते हैं, सिस्टम के टेबल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग फंक्शन भी हो सकते हैं. तो थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट बस वहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, चीज़ों के नाम बदल जाएंगे. तो एसक्यूएल अगर सीख लिया तो मतलब बाकी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा बता रहे हैं. सो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट कंबाइंस रिजल्ट फ्रॉम टू सेलेक्ट क्वेरीज इनटू वन रिजल्ट सेट. हमने ऊपर पढ़ा था, यूनियन था. So what built-in database contain metadata about all other databases, tables and column in MySQL. Basically information schema. SCHEMA. Let's move to the task 3. यहाँ पे बता रखा है what is SQL injection. बेसिकली SQL इंजेक्शन क्या है. तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी का यूज़ करते हैं. जो वेबसाइट जो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं है, उसकी क्वेरीज पैरामीटराइज नहीं है, तो वहाँ पर SQL इंजेक्शन ईजिली अटैकर अपना इनपुट डाल देते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर बता रखा है हाउ वेब एप्लीकेशंस यूज़ SQL. SQL यूज़ कैसे करती है जो वेब एप्लीकेशंस है. यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, लाइक ये वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे, इसके website.tsm आर्टिकल ID is equal to 1. अब ये जो ID है ये क्या होगा, एक क्वेरी है. हम यहाँ पे क्वेरी डाल रहे हैं कि ID1, इस आर्टिकल की जो ID1 है वो हमें शो कराओ. तो यहाँ पे SQL का यूज़ हो रहा है. बेसिकली ये ID देखते हैं हमें पता लग गया. यहाँ पे बता रखा है कि व्हेन यू ब्राउज़र वेबसाइट, बहुत सारे पेजेस जनरेट डायनामिकली फ्रॉम अ डेटाबेस. तो कई बार क्या होता है कि ये जो चीज़ है वेबसाइट में दिख जाती है, कई बार है सिर्फ ये चीज़ नहीं दिखती बट वो काम कर रही होती है बैक में. तो ये वैल्यू जो 1 होती है यूआरएल से एसक्यूएल क्वेरी में यूज़ होती है, मतलब. ठीक है. अब यही जो चीज़ है इन्होंने एक क्वेरी बनाई है बस इसका यूज़ करके 1 का, कि 1 हम क्वेरी दे रहे हैं आईडी में, जिससे हमें डेटाबेस से कुछ डेटा फेच होगा. तो हम उसी का एक क्वेरी बना देते हैं कि आईडी तो हमारी 1 ही रहने वाली है, बट इस बार हमें डेटा क्या चाहिए आर्टिकल्स में से, वो कुछ इस टाइप का इन्होंने बनाया. सो वो करते हैं हम कि डेटाबेस रिटर्न आर्टिकल आईडी. अगर ये पब्लिक होगा तो आर्टिकल आईडी ये 1 है, डेटाबेस रिटर्न करेगा. तो यहाँ बता रखा है कि वेब सर्वर जो है पेज हम जो देख रहे होंगे वो रेंडर करेगा, लाइक पॉपअप करेगा. यहाँ पे बफ शूट का यूज़ कर रहे हैं तो वो सीधा रिस्पॉन्स में शो कर देता है. ठीक है. मतलब दिस इज हाउ मोस्ट डेटा ड्राइवन वेब एप्लीकेशन वर्क. अब है वेयर दैट वल्नरेबिलिटी लिव्स. इनकी वल्नरेबिलिटी बेसिकली होती कहाँ पर है. तो द प्रॉब्लम arises when the application builds the query by directly concatenating user input into SQL string. If the server side code looks something like this. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग था. लाइक ये वेबसाइट है, हम जिसको ऐसे सर्वर पे भेजेंगे, जैसे इनपुट करेंगे वेबसाइट पे, क्लाइंट तो सर्वर को रिस्पॉन्स करेगा, सर्वर इसको उठाएगा और इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में इनपुट कर देगा कि ये क्वेरी आई है, सीधा ऐसे इनपुट कर दो.
तो यहाँ पे सीधा कॉन्कनेक्ट कर देगा एसक्यूएल में जो भी हमारा इनपुट है, ना तो वो वेरीफाई करेगा ना सैनिटाइज करेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। देन जो वॉट हम जो आईडी पैरामीटर में पुट करेंगे, लाइक अगर यहाँ पे सैनिटाइज नहीं है प्रॉपरली सैनिटाइज, तो आईडी के अंदर हमने डाला यहाँ पे 1, तो वो जो 1 है वो डेटाबेस में एज इट इज़ पुट कर देगा डेटा फेच करने के लिए। अगर वो सैनिटाइज नहीं है क्वेरी या फिर वैलिडेट नहीं हो रही है, तो अटैकर क्या करता है, ये 1 की जगह पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी कुछ और ही डाल देता है। लाइक यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है 1 और 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। लाइक अगर पब्लिक नहीं है कोई चीज़ तो वो भी बाहर आ जाएगी, क्योंकि डबल टेस्ट करने के बाद में जो भी चीज़ होती है वो इग्नोर मार दी जाती है। तो ये चेक होगा ही नहीं कि पब्लिक है या नहीं, प्राइवेट है तो भी वो दे ही देगा। इसका मतलब है जो क्वेरी है ये बोल रही है कि जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं वो ट्रू है, ठीक है। लाइक यहाँ पर बता रखा है कि ऑलवेज कम्स ट्रू। नाउ एसक्यूएल के कुछ टाइप्स हैं, अगर बता रखा है 3 टाइप्स ऑफ द एसक्यूएल इंजेक्शन। SQL injection techniques are categorized based on how the attacker will receive feedback from the database: in-band, blind SQL, and out-of-band. So in-band जब रिजल्ट जो होता है हमारे इंजेक्शन का वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाता है वेब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में। लाइक समझ रहे हो, हमने जैसे क्वेरी डाली वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, वो इन-बैंड हो गया। तो ये मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का हो गया, लाइक इनपुट डाला और रिस्पॉन्स आया। तो इसमें 2 टाइप की एसक्यूएल होती है, एक तो एरर बेस्ड, दूसरी होती है यूनियन बेस्ड। एरर बेस्ड होती है जो डेटाबेस क्या होता है एरर मैसेज रिसीव करती है। लाइक हमने कॉलन डाल दिया किसी वेबसाइट के पीछे, तो अगर उसने एरर शो कर दिया, कुछ भी टाइप का एरर हो, 404 403 कुछ भी, तो वहाँ पर एरर बेस्ड एसक्यूएल होने के चांसेस है। दूसरी है यूनियन बेस्ड। द अटैकर यूज यूनियन, यानी कि यूनियन क्वेरी को डाल के कुछ अपेंड कर देते हैं कुछ सेकंड क्वेरी और डाटा एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं, इससे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन फेच की जाती है बेसिकली। नाउ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ये बड़ी टफ चीज़ होती है जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन होती है। ये जो वेब एप्लीकेशन हम क्वेरीज डालते हैं ये एरर मैसेज शो नहीं करती कभी भी, वो इनबैंड में होता है सिर्फ। अगर एरर मैसेज शो नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं है। उसके बाद हमको ब्लाइंड पे मूव करना होता है कि ब्लाइंड में क्या होता है कि एरर मैसेज शो नहीं होते हैं और जो डेटा है वो डायरेक्टली शो नहीं होता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली फेच की जाती है, इसमें ज़्यादातर हम वर्कशूट का यूज़ करते हैं। तो इसमें आता है ऑथेंटिकेशन बाईपास, मीन्स लॉग इन सक्सीड और फेल्स बेस्ड ऑन इंजेक्टेड क्वेरी, ठीक है। दूसरा है बुलियन बेस्ड, बुलियन सब समझते हैं, ट्रू और फॉल्स वाला सिस्टम, जैसे ऊपर अपने ने बताया। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिस्पॉन्स चेंज सब्टली बोल रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन जो रिस्पॉन्स है वो हमारे इनपुट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। ये बोल रहा है एग्जांपल के लिए डिफरेंट कंटेंट ट्रू और फॉल्स, बुलियन बेस्ड का नाम यही है। ये मतलब वेरी करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पे आउटपुट आएगा। ये थर्ड वन है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड में ये जो फंक्शन दे रखा है स्लीप फंक्शन, इसका यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है जो सर्वर जब रिस्पॉन्स करता है तो हम डालेंगे जैसे स्लीप 5, तो 5 सेकंड के लिए सर्वर लेट रिस्पॉन्स करेगा, लाइक रिस्पॉन्स करेगा तो थोड़ा टाइम ले लेगा, सो जाएगा बीच। सो ये होगी टाइम बेस्ड ना। अब आउट ऑफ बैंड, ये जो लास्ट में रखी हुई चीज़ है ये बड़ी तगड़ी चीज़ है। यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में कि when an attacker causes the database server to make an external network request like DNS lookup that exfiltrate data through the separate channel. This is used when neither in-band or nor blind techniques are viable.
जब ये दोनों काम ना करे चीज़ें तो आउट ऑफ बैंड यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि क्वेरी का जो सेपरेट नेटवर्क बन जाता है, लाइक डीएनएस लुकअप एग्जांपल दे रखा है ना, तो डीएनएस लुकअप के टूल्स भी होते हैं। तो हम जब डीएनएस लुकअप करते हैं तो उसके साथ में कुछ ऐसी क्वेरीज इनपुट कर देते हैं जिससे डेटा फेच हो जाता है। तो ये आउट ऑफ बैंड है, थोड़ी टफ चीज़ है। नाउ डिटेक्टिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, कैसे डिटेक्ट करते हैं, पता कैसे लगेगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं। तो बिफोर वी एक्सप्लोइट एसक्यूएल इंजेक्शन वी मस्ट नीड टू फाइंड इट। ये तो हमें पता है। वी नो that as a pen tester, as a as a okay, as a tester बोल सकते हैं हम, वी आर टेस्टिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। तो पता तो होना चाहिए कि एसक्यूएल कहाँ वेरी कर रही है, कर भी रही है या नहीं। तो उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, रिस्पॉन्सेस के हिसाब से हमें पता लगाना होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ डिटेक्शन मेथड शो कर रखे है कि मीन्स यहाँ पे टेस्ट कैरेक्टर्स है। यहाँ पे सबसे पहला है सिंगल कोट, लाइक हम यूआरएल में सिंगल कोट इंटर किया तो डेटाबेस गिव्स अस एरर, तो हम समझ जाएंगे इट्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबल। ठीक है। सेकेंड है डबल कोट्स, सिंगल कोट्स काम नहीं करता है, डबल कोट्स काम कर जाता है कई बार। ठीक है, लाइक ये सिंगल कोट्स की तरह ही है, बट यहाँ पे सिंगल की जगह पे ये यूज़ करता है। और ये वाला एक और, जब ये भी काम ना करे तो ये वाला पुट करने पे जो अभी एप्लीकेशन है डिफरेंटली बिहेव करती है, या तो कुछ और ही कंटेंट दे देगी या फिर कमेंट सिंटेक्स में कुछ और ही प्रोसेस कर देगी, कुछ भी हो सकता है। लास्ट है टेस्ट और, ये बूलियन कंडीशन, ये रिजल्ट को चेंज कर देती है, मेरी क्वेरी लॉजिक को डायरेक्टली इनपुट। ठीक है। नॉट एवरी टेस्ट विल प्रोड्यूस विजिबल एरर, हो सकता है इनमें से एक भी काम न करे लेकिन उसके बावजूद भी एसक्यूएल इंजेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। सो इफ द एप्लीकेशन सप्रेसेस एरर्स you may need to rely on behavioral differences like boolean based or timing delays or confirm injection. We will cover each of these techniques in detail. ठीक है। वो the following tasks यहाँ पे कुछ देर की चीज़। ठीक है। So what character is commonly used as a first test when probing the SQL injection? जाहिर सी बात है यही होगा। So what type of SQL injection returns result directly in the web pages? अब डायरेक्टली वेब पेजेस में कौन सा SQL इंजेक्शन जो है हमें रिस्पॉन्स में डेटा रिटर्न कर देता है? सबसे पहला कौन सा था हमारा, इनबेंड। मूव करते हैं इनबेंड एसक्यूएल इंजेक्शन पे। तो यहाँ पे ये अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। यू हैव एन एरर ऑफ यू एसक्यूएल इंजेक्शन, कुछ इस टाइप का एरर शो कर जाता है। यूनियन बेस्ड यहाँ पे दे रखी है, वन यूनियन सेलेक्ट दिस, आइडेंटिफाई विच कॉलम्स आर डिस्प्लेड, इंफॉर्मेशन स्कीमा, इनमरेट टेबल्स, एक्सट्रैक्ट द डेटाबेस नेम। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं हम, बट यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है जो चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि कॉलम्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं, यूनियन सेलेक्ट दिस। उसके बाद में डेटाबेस का नाम हमें नहीं पता तो इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें है वो हम सेलेक्ट करेंगे, कॉलम्स में क्या क्या है। उसके बाद में सीधा डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस। कुछ अंडरस्टैंडिंग दे रखी है, पढ़ लेना अच्छा सा। व्हाट सब टाइप ऑफ इनबेंट जो एरर शो करती है, एरर बेस्ड होती है। नाउ व्हाट एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द नेम ऑफ द करंट डेटाबेस। डेटाबेस ये
let's move to the blind SQL injection authentication bypass. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड SQL एंड आउट ऑफ बैंड. ओके, ब्लाइंड में क्या होता है हमें बताता है. यहाँ पर एरर वगैरह सब नहीं आते, डायरेक्ट रिस्पॉन्सेस नहीं आते. हम जैसी क्वेरी डालेंगे उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स मिलेगा. सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ऑथेंटिकेशन बाईपास कैसे करते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे है, यूज़ कर लेना. यहाँ पे कुछ अटैक सिनेरियो दे रखा है. ये जो चीज़ है, ये क्वेरी इनपुट करते हैं हम यूज़र नेम में. उसके बाद में पासवर्ड डालने की नीड नहीं होती. आप कुछ भी डाल दो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इग्नोर ही कर देगा अगर एसक्यूएल है तो. ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से. जिसको भी नहीं पता है, इसको सिर्फ रूम क्लियर करना है वो. लेट्स मूव टू द टारगेट. टारगेट स्पेसिफाइंग यूज़र. जो भी टारगेटिंग अ स्पेसिफिक यूज़र, इसको टारगेट करना है. उसके लिए क्वेरी दे रखी है, एडमिन को टारगेट करना है. वेरिएशंस दे रखे हैं डिफरेंट. कई बार क्या होता है, एक वेरिएशन काम नहीं करता तो ये काम कर देता है, ये नहीं करता तो ये कर देता है, ऐसा कुछ. यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट बूलियन कंडीशन इज कॉमनली इंजेक्टेड टू मेक अ वेयर क्लोज ऑलवेज एलिवेट टू यूज. बूलियन बोल रहे हैं ना, तो हमें ट्रू कंडीशन या फॉल्स कंडीशन, तो हम ट्रू डाल देते हैं. 1 इज इक्वल टू 1. हम तो चाहते हैं कि हमारा डेटा मिले, हम फॉल्स क्यों डालेंगे. लेट्स मूव टू द बूलियन एंड टाइम बेस्ड. बूलियन में पता है ट्रू फॉल्स का मामला होता है. ठीक है, लाइक का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे. लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ये हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन कंफर्म हो रहा है. इंजेक्ट कंडीशन, दिस इज ऑलवेज ट्रू. अगर ट्रू मिला है तो इंजेक्शन कंफर्म है. ना गैस द डेटाबेस ने, हमें तो नहीं पता, सो हम लाइक का यूज़ करके गैस कर देते हैं. दूसरा है गेट टेबल एंड कॉलम नेम्स इंफॉर्मेशन स्कीमा. नाउ टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, स्लीप, इसका यूज़ करते हैं. ये सारी क्वेरीज का हम यूज़ करेंगे, सीधा कॉपी पेस्ट ही कर देंगे हम. ज़्यादा कुछ नहीं करना. आप लोग अच्छे से कर लेना. जिसको एसक्यूएल नहीं आती वो सीख लेना. ये क्वेरीज लिखने में आसानी आ गई. जो नहीं लिखना चाहता, यो चॉइस. फाइंड द कॉलम काउंट लाइक दिस. इनमेरिट डेटा. वर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कुछ देर का. ठीक है, कि व्हेन टू यूज विच, कौन सा कब यूज़ करना है. तो जो भी ऐप अलग कंटेंट शो कर देता है ट्रू वर्सेस फॉल्स में, वहाँ बूलियन बेस्ड हो गया. और जो भी ऐप रिस्पॉन्स लगता है कि हाँ ये तो कुछ मैटर्स कर रहा है, आइडेंटिकल है, जो भी कुछ होता है वो टाइम बेस्ड होता है. और टाइम बेस्ड ब्लॉक हो गया और अनरिलायबल है तो आउट ऑफ बैंड जो नेक्स्ट टास्क है. कुछ नहीं है हमारे पास तो फिर आउट ऑफ बैंड ही ट्राई करना सही बनता है. सो इन द प्रैक्टिकल वॉक थ्रू, प्रैक्टिकल इज टास्क 9. हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, डोंट वरी, वहाँ पर सबका अच्छे से पता लग जाएगा. तो यूजर नेम चेक्स API that return true false response and level for move to the time based SQL via the referrer header with no visible differences in response. So the question is, कौन सा SQL function, MySQL function, cause a deliberate time delay in a query's response, basically sleep. Now let's move to the out of band SQL injection. This is tough and very against intellectual. So out of band, it works differently from everything covered so far. We've covered in band and blind. So instead of reading results through the web responses, we force the database server to reach out a server we control through a separate channel, usually DNS or HTTPS, and carry the stolen data with it.
सो हमें ज़रूरत कब पड़ती है आउट ऑफ बैंड की? जब सब कुछ फेल हो जाता है। तो इन बैंड इज ऑफ, boolean based doesn't work, time based and unreliable, but the database server can make outbound connections. यहाँ पे लास्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट। ये होना चाहिए कि डेटाबेस सर्वर जो है आउटबाउंड कनेक्शन बना सकता हो, अदरवाइज ये भी परफॉर्म नहीं होगी। इट मीन्स एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं है। हो सकता है कि भाई कुछ फायरवॉल्स हो, ट्रैफिक ब्लॉक कर दे रिलेटेड डीबीएस पे, ये भी हो सकता है। ये वर्क कैसे करता है? तो फर्स्ट 2 चैनल्स आर इन्वॉल्व, तो अटैक चैनल होगा किसी के, और दूसरा डेटा चैनल होगा। अटैक चैनल वी नॉर्मल वेब रिक्वेस्ट विद इंजेक्शन पेलोड, इंजेक्शन पेलोड से हम रिक्वेस्ट करते हैं वेब रिक्वेस्ट। एंड डेटा चैनल एंड आउटबाउंड नेटवर्क रिक्वेस्ट, या तो डीएनएस या एचटीटीपी, एस तो यूज़ कर नहीं सकते। जो डेटाबेस सर्वर है एक खुद का सर्वर बनाएगा हमारे लिए, वहाँ पर वह एक्सपेक्टेड डेटा जो भी हमने रिक्वेस्ट करी है उसके साथ। अब है डीएनएस एक्सफिल्ट्रेशन विद मायस्क्यूएल, ये वाली चीज़ थोड़ी मेरे लिए भी नहीं है, मैंने ये पढ़ा नहीं था, तो अभी देख लेते हैं। The most common OOP tricks for MySQL users is load file, okay, to trigger DNS lookup. So you embed the data you want to subdomain, want as a subdomain, okay. हमें जो भी डाटा चाहिए वो हमें एम्बेड करना है SQL क्वेरी के साथ में। क्वेरी होनी चाहिए हमारी लोड फाइल की, कि ये फाइल लोड करनी है एंड कॉन्केटनेट करनी है हमारे किसी सर्वर पे जो हमने बनाया है। तो उसमें क्या करेगा कि डेटाबेस सोचेगा ये तो हमारा ही नया डेटाबेस है, तो वो जो भी डेटा होगा हमने उससे कहा है डेटाबेस से रिक्वेस्ट में, वेब रिक्वेस्ट में, वो सीधा इसके साथ हमारे जो भी अटैकर का सर्वर होगा, हमारा नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे, सॉरी गाइस, तो अटैकर का डेटाबेस है उसमें कॉन्केटनेट कर देगा। तो बेसिकली होता क्या है कि select database, pulls the database name, ठीक है, like database name webAppDB. Now concat function build a string like this webAppDB attacker.com share. Now load file, try to read that file path on Windows, on another OS. This initialize a DNS lookup. सो इस वाले साइट जो भी अटैकर का है उसका डीएनएस लुकअप ट्राई करेगा, ट्राई कर इनिशियलाइज कर देगा। सो अटैकर का डीएनएस सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट कैच करेगा उस डेटाबेस से, जो भी लॉग्स है लाइक वेब ऐप टीवी, तो डेटा इज इन द सब डोमेन। सो दिस वर्क्स ऑन अ विंडोज बेस्ड एसक्यूएल सर्वर्स where UNC path trigger DNS resolution. So ये सब विंडोज बेस्ड एसक्यूएल सर्वर्स में हो सकता है, काम करता है, लिनक्स वगैरह पे नहीं। हम तो लिनक्स यूजर्स हैं, ये टेक्निक्स तुम्हारी ज़्यादा कुछ काम की है ही नहीं, जो भी। हाँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो अभी भी विंडोज बेस्ड एसक्यूएल सर्विस यूज़ कर रही है, लेकिन ओवरऑल कंपनीज बड़ी बड़ी देखें तो सारी लिनक्स यूज़ करते हैं। एक अच्छा है, बहुत अच्छा लिनक्स होता है रेड हैट एंटरप्राइज, उसके साथ में ऐसी लिनक्स सिक्योरिटी भी आती है, ज़्यादातर वो यूज़ करती है। और दूसरा यूनिक्स, वो भी यूज़ करते हैं, तगड़े तगड़े हैं। तो विंडोज़ की तो कहाँ नीड है, यहाँ पर टेक्निक्स दे रखी है, एसक्यूएल टेक्निक्स, कि भाई एसक्यूएल server has a stored procedure that make OOP more direct. ये क्वेरीज यूज होती है आउट ऑफ बैंड में, ठीक है। एंड रिसीविंग डाटा, यहाँ पे वर्क कोलैबोरेटर वर्कशूट का यूज़ हुआ है, गिव्स अ यूनिक सब डोमेन, और यहाँ पे इंटर सीटी एसएच, इंटरेक्ट एसएच फ्रॉम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी डज द
Same thing, but is free and can be self-hosted. And a custom listener. Listener में समझते हो आप लोग. It's like a Python DNS server with DNS library or a bare bones HTTP server. If we want full control, means full control करना, वो सेल दे देगा अपने, वहाँ से हम कुछ भी समझ रहे हो. So limitations क्या है? Out of band has constant worth knowing about. First, जो भी डेटाबेस सर्वर है जहाँ से हम डेटा फेच करना चाहते हैं वो आउटबाउंड नेटवर्क एक्सेस कर सकता हो, रिस्ट्रिक्शन हो. सेकंड, जो भी हमारे पेलोड इंजेक्ट करेंगे, जो भी अटैकर पेलोड इंजेक्ट करता है, डेटाबेस इंजन स्पेसिफिक होनी चाहिए. लाइक MySQL हो गया, MS SQL, PostgreSQL, तो इनके लिए अलग अलग सिंटेक्स होता है. लाइक यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, ये MySQL का है, तो जब हम इन पर मूव करेंगे तो सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे काम ना करे. So DNS exfiltration has size limit. Subdomain labels are limited to 63 character each. तो लिमिटेशन की वजह से भी कई बार काम नहीं कर सकता. So it is generally slower and flaking than pulling data directly. Flakier. Okay, now the practical lab as room doesn't cover Ruby. It would require external DNS infrastructure. वो तो हम बना देते हैं अगर कर रहा होता तो, बट कोई बात नहीं. We should understand the technique. Okay, so now we will hit this situation in a real engagement where it isn't their only option. So let's move to the questions. So what protocol beginning with D is commonly used to exfiltrate data in out-of-band SQLi? बेसिकली DNS का यूज करते हैं ना हम तो. So what MySQL stored procedure can be used to trigger DNS lookups for data exfiltration? तो क्या था? MySQL stored procedure can be used to trigger DNS lookup for data exfiltration. इसके लिए हम प्रिपरेशन करते थे स्टेटमेंट्स की, है ना. अच्छा, प्रोसीजर का नाम हम प्रिपरेशन करते थे, इनकी प्रिपेयर्ड हो सकता है. नहीं डी ट्री करके कुछ था, ये रहा. XP directory tree is still available and gets used regularly in pen test. And one more is here, CMD cell. XP directory tree. This is it. Let's move to the remediations and prevention. I think मुझे ये पढ़ने की नीड नहीं है, ये भी देख लेते हैं, होना चाहिए पता, क्योंकि when जो बग बाउंड्री करते हैं उनको ये चीज़ खास तौर पे ध्यान रखनी होती है, नहीं तो हमारी जो रिपोर्ट होती है वो वीक पड़ जाती है. जो कुछ पैरामीटराइज क्वेरीज के लिए दे रखे हैं, ये चीज़ है. वैलिडेशंस, ये वल्नरेबल PHP कोड है, उसको फिक्स कैसे किया है उन्होंने, ऐसे किया. Like user get concatenated into the query string and attacker can escape quotes and inject whatever they want. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूज़र नेम सेलेक्ट हो जाएगा, बट जो भी लाइक हम कोमास डालेंगे, कोट्स डालेंगे, आइफन्स डालेंगे, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, जो भी क्वेश्चन मार्क का प्लेस होल्डर है यहाँ पे, लाइक हमने ये डाला है, तो ये सारी चीज़ें इसमें
और शो होगा या फिर ये शो होगा, ये बात की सारी इग्नोर कर देगा। सो लाइक यूज़र ने ये इनपुट किया है, तो डेटाबेस क्या करेगा, इसको एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, एक क्वेरी की तरह नहीं। सो इट नेवर टचेस द क्वेरी स्ट्रक्चर। लाइक इफ डेटाबेस तो स्टोर करना चाहता है ना यूज़र नेम को, वो इससे हो जाता है। वल्नरेबल पाइथन कोड यहाँ पे, ठीक है, उसका फिक्स वेरिएशन ये है, ये इन्होंने स्ट्रिंग बना दी थी। सो दिस इज इनपुट वैलिडेशन। अब ये क्या था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये मतलब पैरामीटराइज क्वेरी थी ये वाली, और ये था इनपुट वैलिडेशन, यानी जो भी इनपुट कर रहा है उसको वैलिडेट करो कि सी टाइप डिजिट मीन्स अगर आईडी है तो वो सिर्फ डिजिट को ही इनपुट मानेगी, अगर एक के साथ में कुछ और डाल दिया लाइक सिंबल्स डाल दिए तो वो वेरीफाई नहीं करेगा, एरर शो कर देगा सीधा, दिस इज रॉन्ग। अब एस्केपिंग यूजर इनपुट, ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज, यानी कि इतना प्रिविलेज दो ही नहीं कि यूज़र सेलेक्ट क्वेरीज, यूनियन क्वेरीज ये यूज़ कर पाए। अब एप्लीकेशन फायरवॉल्स लगा दो, जो भी क्वेरीज आई उसको इंस्पेक्ट करेगा, अगर अटैक पैटर्न शो हुआ तो सीधा अलर्ट शो करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो द काइंड ऑफ थिंग बट फायरवॉल मेजरली बाईपास हो सकता है। सो व्हाट इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट SQL इंजेक्शन? सबसे पहला हमारा था प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। Now let's move to the practical. Let's move to the lab. So here to start the machine, right? So okay, this is good. We can increase the time. It's like in a text box for a separate portion. So तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है कि this task puts you in front of 4 levels. Okay, we have 4 levels of the lab. Okay, when the machine will start fully, it will show the machine IP here and browse. Okay, in that browser, this is the URL we have input in the input field of the browser, and we will start the SQL injection. First we detect, no, first we find, then detect, check, get, extract. So first level is a union based SQL. So what you see, a mock browser showing a blog article, my first article. The SQL query box shows this. So first we find the column count, then move to the output visible or not, then get database name, table listing, column listing, credentials, then authentication bypass level 2. This is a blind based, I think. Yeah, it is. Not you think. This is blind also. Boolean based blind SQL level 3, and this is level 4, what we see. So I can open this in another browser screen, it will help us. Wait.
Wait a sec, guys, this is it. Okay, it is visible now, I think. Okay, so our first label, this is a in-band SQL injection. Error based is the first. So this is the website.tsm article ID. And hi, welcome to my first article of my new website. So what we do, we can use the union and select from article where ID is 1. So union select 1. The cardinal evaluation, okay, I think it is not the correct one, not one, check it, not this one. Oh, I think this is it. My first article, this, hi and welcome my web. So it is not fully showing us, but this is a user extraction showing. So the article ID is 1. It's showing in the SQL query. Now we have to find the Martin's password. So this is it. Now we will get the database name of the database. So we use a database. Function use करेंगे हम. Okay, what it told us. Okay, execute command denied to user. This is SQLi 1. I think it is the name of the database, right? Yeah, because it is the first task. Let's copy it. For routine SQLi 1 dot database. Yeah, it is the database. So now what we will do, we have the database name. Now we will list the tables of the database. Okay, so we use the same query, and now we will use the function group concat, I think. Let me check. Group concatenate, voila. Yeah, we find the database name. Now list table, yeah, this one. We will go to use this. So not here, here. Okay, group. I think I must have to copy and paste because the queries are too long. It will take time, and I think I wasting your time. But it is okay because you are learning something new, and I also enjoying this. So we will put the table name here. Okay, concatenate table name. What is the table name? We must have to find this. So from, you will use the information schema. Dot tables, and where, from where, gre. Your table schema is SQL, so our table name is where table and underscore schema schema is equal to our database name, I think.
SQL1. I think this is the query. Let me check. Hey, what's the table name? It is showing or not? It is not. Maybe there is a mistake. So into group concat table name. So here's we didn't put the table name here. Okay. From information schema dot tables. Okay. What is in that? Okay, I just will write this. Oh. So basically we are on the ID first. This is why this is not working. You have to put 0 here. Okay, now it works. So why 0 is used here? 0 is used for the real article, I think. Okay, 0 returns the name of the current database. Take care. Yeah, 0 is the original query, returns nothing. I mean, it didn't search in the ID 1. It search on in the whole database, I think. So we get the article and staff user, the table name. We have 2 table names. Okay. Now what we do? We listed the tables, and now we list the columns. Okay. So here we are going to use the information schema tables. And now we are going on the columns. So we use the column where table name is staff users. So here is a COLUMN. We have only one column, I think. Columns from where? From table schema? No, we don't have table schema. Right, we have the table name. What is the table name? Is a not SQL table name is a staff users and article. First we will check staff users because this is interesting, because the user's name is involved in this. Okay, it is showing us one more error. So access 1064, you have an error in your SQL. So check the manual. Okay, now stop it at line 1. So it has an error. Where it has error, because our target table is a staff users, STAFFUSERs. Table name COLUMNS. I think this is okay. No, it is giving us error, syntax error. Let me check. Okay, which one is listable? List columns in the target table. So we did wrong. Okay, I didn't did the right one. This is the year we are
for the table name concatenation. Now we have on the column name. This is the syntax error. COLUMN. I think this is this one. Okay, column name. Let me enter it. Columns name. Wait. Column name. Columns where table name. Column name. Columns where table name is staff users. Oh, we have one more. This is it's low. We have the columns ID, username and password. Now we have to extract the credentials. So this is bad, bro. Okay, the group concatenation, what we put it in, we will put the because we are going to extract the credentials, we use the username and password separator. So username, username, and this is a password separator. PASSWORD SEPARATOR separator, and here is the thing we must have to write called what is called BR, I think, this one, and parenthesis closed. From what is the column name? Staff users. Yeah, we got the admin and the password. Admin is Martin, the password is Zim, the password is 123. So this is the Martin's password. Here is asking about Martin's password. This is the Martin password. Check password. Oh yeah, we are on the level 2. So it is a blind SQL injection. So here, if we want to fetch information like we fetched on level 1, we can use the from where user limit 1. It's easy. This is this one query. We will get the username and password. Okay, we just copy and paste. What we will do, if it work, yeah, it is about it is showing me actual lines. What about target 2, level 2? Okay, nothing is there. If it is not giving us an error, not changes the thing, not changing the thing, it means it is executable. It executed. Oh, sorry, I did the wrong one. We can bypass the authentication using this one. So password is limit 1. Sorry guys. And here is you can put the query, like the query is called OR uh, 1 is equal to 1
this and this. I think it is. Let me check. It is not working. It is not working properly. I think we have to use this one. From users, username is this. From users, where username is this. Yeah, I'm doing right, so we can try it from here. Wait a sec. This one we can try on the login form, right? Password could be anything if you want to put. This one. This is taking input from here, not from the URL. That's why it is not working. We passed the level 3. Let's move to the level 3. We passed the level 2, sorry. So now we have SQL Injection 9581. This is the flag you must have to copy. Sorry, where we are here. So what is the flag after completing level first? This is, oh, we didn't copy the level first flag. Wait, I think we will do after this again. So let's move. Again we can here, what was the password for yes, we can again this one, we didn't copy it before. Let's do it. Okay, now we are on the level 3, right? So in a level 3 called Boolean based blind SQL injection. Okay, this one. So according to the levels, I will take a guess because it is simple. Okay, I think because it is true. It's not a real world scenario. It is here for learning purposes. So I will use full. So you can follow this steps for the practice. Okay. Let's go on the level 3. So what first we have to do level 3. This is the taken true. This is the query admin. The username is true, means the username is the admin, and the username is giving us a response. So it means username is the column of the table. We are the check user. What was the table name? What is the table name? We have to find the table name. Table name could be a users. Yeah, I think. Okay, so this is a big guess. Let's move forward. So first step was to confirm the injection. Okay, here is the admin. We can, this is true, but we can put here 1 2 3 about along what we want. Okay, so the union select 1 2 3 we will put again the first level query, and where we will fetch database like this is this. So
I'm just copy paste. Okay, copy and paste the previous one. So this is union select 1 to 3 database. This query is confirmed the SQL injection. It is taken true. Okay, it confirms that the boolean based blind SQL injection is here. Sorry about the background noises, by the way. So our second step is a database name. To get a database name, so then we will fetch the database name. So in the first level, wait, our first level shows the database name is SQLi1. So here I will try the SQLi3 according to level 3. Maybe the database name is SQLi3. So I'll try if it is okay. Like S, like this. Okay, this is the master symbol. You can try according this one. So I'm putting here SQLi 3. It is false. Maybe it is a syntax error. Okay, this is true. What if this is false? Like if we write the wrong letter in the field of the database, it will show as a false taken. So if you write the right letter, it will show the true one. So write this one, true. If I write another one, it will give the false. So our database name is SQLi3. It is a guess, but it is okay. We have saved our time. So the database name is SQLi3. Now we have to find the table names. Okay, we can use the information schema dot tables, and table schema is SQLi3. Table name we have to find, but according to this, I think the table name is users. Most of the database uses users. So I'm just copying the queries or right one. Okay, this information schema dot tables, we have this
create a sub. This one. Here I will put the name users. It is a guess, okay? Let's check it. Yeah, it is true. So our table name is users, right? And now we will fetch the column name. Column name, basically this can be a column name, this can be a column name. So using this one we have to change the table schema as SQL 3. Table name is this. Now we have to find the column. So here is a column. Here's the column name. And query will be this. Okay. Inform schema dot columns. The table name is this. I will check first. So columns, where no table schema here. We will put the table name. What is the table name? Table name is users. Table name like there is not a table name, it is column name. Like not user, can be a username, so we will try this. Percentage symbol, true. User, sorry, name, true. Okay, when we will try WORD password, it is also true. We have two columns, username and password. Now we have to find the username and information of the password. So we will use again the same query, union select 123 from user, where username, like we want that. We don't have username, right? We must have to guess the username. Here we will do the thing. Let's delete this one. Okay, this one, username, like what could be the username? We don't know, by the way. So we will take the alphabet username A, alphabet letter A, because we are beginning our fetch. Try. Yeah, it is true. We will take B. It is also true. What is happening here? C. It is also true. True. What is happening here? I think my query is not okay. Wait. Or I think I have to from users. Is this okay? I think it is okay. इसके यूज़र नेम हमारे पास है, पासवर्ड्स
from users where username like. I think it is okay. Union select. Oh, what I am using. Oh, I'm not using this one. I forgot about it. This one. Holds. Oh, this one. Union select 1 to 3 from users. I think I can get one thing. I have this one, but I forgot about it. Didn't checked. Wait, let me take a guess. Everything will be true. Admin is true. Admin is true. These all are going to true. What is in that? Okay, we will try admin. Yeah, this one. Now we have to get the password. Is 3. It is started from 3 in a task. If you read the room's content, you will get. Now how I will get the password, because everything is showing me true. Now I think it will work. So first see the video and then move to the next part. It is, oh my gosh, what is the problem is here, bro? Union select. Wait guys, I'll again copy. This one to extract the password. This one. This is the file. Wait a second. Yeah, now it is okay. What I did wrong. It is same as we put here before. Okay, now you will you can copy. Okay, sometimes it not work. It doesn't work. Ad admin. Okay. Password like. Yeah. We started from 3 4. I think I also did this wrong. Okay, we'll try again. I didn't. Here.
Let's so again I enter a password to it. Wrong 3, wrong 5, wrong 7, wrong 9. No, it is also wrong. 8. It is 2. Let's move to next. We will put 7. False. 6. False. 5. False. 4. True. 1. False. 2. False. 3. False. Oh, when we will get 6. I forgot 5. It's 2. And 1, 2, sorry. Oh, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Oh, nothing good. Means the password is 3854. 3854, because at the end not any digit worked. Incorrect username password combination. Yeah, we are right. The username is admin, password is 38545. Again I will have it 3845. Yeah, we got. This is the flag of level 3. Sometimes we need to check the queries because the silly mistake got us a stack everywhere. Okay, now level 4 is a time-based blind SQL injection. This is also a part of blind. So now what we will do, we have the referral analytics tryhackme.com. So first what we will do, we'll put the sleep query with 5 in the column count it. Okay, it doesn't have wait a sec guys, let me check, is it okay? Yeah, time based blind SQL injection. It is using the admin 123. Why? Oh, wait. So here the thing is guys, this is the website responses is okay. This is a request time. Didn't understood what is what here. So this is a login page. Okay, this is the referrer. This is SQL query we will put here. Okay, so what the first, to find the column count. Let's try this one. So
request time 3. You can change this one. Okay, we only can enter the queries above, so the limit is 1. What is the second? Oh, if the wrong column counts, the response come immediately. So the response come immediately here, like this. So we will put the 5 with 2. This is also wrong. Wait. It is working on the admin 123, not the tryhackme dot. Okay, it is working. It's late about 5 seconds. Okay, so now we have to get the database name and enumerate tables and columns, extract admin password, and that's it. So that's it. So how we will get the database name? We will use this query same as where database, like, okay, where database. So here, I think. Okay, maybe here. Okay, let me try first, then we will. One machine is firing. Wait, put the extend timer. Okay, now. Okay, wait. Where database, like, okay. यहाँ पे put करना है. Where VTA database, like, how, what is the database name? You must have to put here. It can be start from S. Yeah, the sleep file you must have to change to 2. It will take 2 seconds to respond. It will save the time of okay, it will save time. It is wrong. By the way, on the guess, database name could be SQL 4. Let me try. It is taking 2 second response. SQL FOUR. This one. If not, we will try this one. Yeah, this is not okay. This one. So we have the database name. Now what we have to do? We have to find the tables and columns and then extract the information. Okay, so I just copying the command, okay, to find the, wait, our table name is users, and previously I think the database uses same, okay, same, this web page uses the same database, so database name could be changed, but we will try. Okay, our last could be the last. Okay, our column name could be a username and password. So directly we will try to extract the admin password. Okay, so
from users where username, like we will directly try to extract the password. This one. Okay. It is taking time. So now we have to take a guess. We will start from 9. This one is okay. So here we are. This is our final flag. The machine is going to be expired, but I just extended the time. But this is it. Okay. Now the conclusion. Yes, objectives learned, and this is we can just. Great work. This is not the great work. This will hard work. This is hard work, right? So have a good day and a wonderful day. By the way, we will meet in next video.